the students, we are back with LVC for CA Inter FM. In our previous session, which started with new chapter, Management of Working Capital. So in our previous class, we first understood what is the meaning of working capital. So हमने समझा कि working capital is that fund that you need for डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस. ठीक है, फिर डिटेल्ड एक इलस्ट्रेशन एक एग्जांपल से प्रैक्टिकली समझाया था वर्किंग कैपिटल एग्जैक्टली होता क्या है. सो वी अंडरस्टूड दैट एनी फिक्स्ड असेट इन द बिजनेस डज नॉट वर्क ऑन इट्स ओन. ठीक है, सिर्फ फिक्स्ड असेट लगा देने से बिजनेस स्टार्ट नहीं हो जाता. For smooth running of that fixed asset, we need additional capital, and that additional capital is nothing but working capital. फिर हमने इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखे थे. बिकॉज वर्किंग कैपिटल इन ब्रॉडर सेंस इट इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट, बट वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स होते हैं करंट असेट्स, एंड विद इन करंट असेट्स वी हैव रिसीवेबल्स. सो वी नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज द रिसीवेबल्स, we need to learn how to manage the cash, we need to learn how to manage inventory, we need to learn how to manage payable as well. Okay, but before that we started with a topic called estimation of working capital, how to derive the amount of working capital that you need for your business. ठीक है, वो working capital का amount ढूंढते कैसे, that we learned. उसके बाद we also understood the organized professional way of calculating working capital through a descriptive format. फॉर्मेट से जो वैल्यूज फॉर्मेट में जो वैल्यूज डालनी है उसका सोर्स डॉक्यूमेंट वाज कॉस्ट समरी. सो वी आल्सो लर्न दिस फॉर्मेट टू प्रिपेयर कॉस्ट समरी. फिर the formulas of specific line items of each component of working capital we also understood in our previous session. उसके बाद we started with a topic called working capital operating cycle. ठीक है, it is nothing but a process of converting cash back into cash. आज जेब से कैश निकालते हो, वही कैश वापस कितने टाइम में वापस आता है. ठीक है, दैट एंटायर साइकिल राइट फ्रॉम द बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल टिल द टाइम यू रिसीव पेमेंट फ्रॉम योर कस्टमर्स, दैट एंटायर साइकिल is working capital operating cycle. The time taken to complete this cycle was called as duration of operating cycle. ठीक है, and duration of operating cycle की formula क्या थी? Let me just share my screen. To calculate duration of operating cycle, we learned the formula that it is nothing but RM holding period plus WIP holding period plus FG holding period plus debtors collection period less creditors payment period. ठीक है, this was the formula that we learned to calculate net operating cycle. And to calculate number of operating cycles in a year, can I say to calculate number of operating cycles in a year, it was nothing but 12, 365, 52 divided by operating cycle period. ठीक है, मान लेते हैं एक साइकिल को कंप्लीट होने में 60 डेज लगता है, तो पूरे साल में कैन आई से इट विल हैव 6 साइकिल्स. सो 6 साइकिल्स का आंसर कैसे आया? इट इज नथिंग बट 365 और 360 डिवाइड बाय 60 डेज. अगर मंथ्स में ढूंढना है तो 12 डिवाइडेड बाय 2 मंथ्स. ठीक है, तो अगेन 6 साइकिल्स. क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड इन आवर प्रीवियस क्लास. नाउ मूविंग फर्दर, मान लेते हैं सी एज फार एज वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का कॉन्सेप्ट इज कंसर्न ना, तो देर आर 2 काइंड्स ऑफ क्वेश्चन दैट जनरली कम्स इन एग्जामिनेशन. वन काइंड ऑफ क्वेश्चन वैसे होते हैं जहां पे आपको सारे होल्डिंग पीरियड दिए होंगे.
क्वेश्चन में ही होल्डिंग पीरियड दे दिए गए होंगे, ठीक है. सो यू हैव टू जस्ट सिंपली सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड. बट कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जहां पे यू विल नॉट बी गिवन द होल्डिंग पीरियड्स डायरेक्टली. They would give some scattered data. They would give some figures and facts. And based on that, first step would be to calculate all the holding periods. Once holding period is found, apply the holding period in this formula and find net operating cycle period. Clear everyone? ठीक है. सो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं. फर्स्ट जिसमें सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन नहीं दे दी है, जस्ट सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला, मूव ऑन. But when holding periods are not given, the first step would be calculate individual components holding period and then find net operating cycle period. Clear? So उसके लिए we need to learn how to calculate RM holding period. If question does not directly provide you the holding period or storage period, can I say हमें सीखना पड़ेगा how to calculate that. So next step, next concept, or I would say next way, next part of this chapter is to calculate the holding period. Clear everyone? Hey, can you tell me before, see, let's try to derive the formula rather than directly memorizing it. ठीक है. Let's try to derive the formula. Can you tell me हमने डेटर्स की फॉर्मूला, फॉरगेट एसीपी नाउ, हमने जो डेटर्स की फॉर्मूला सीखी थी इन एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, व्हाट वाज दैट? प्लीज टेल मी व्हाट वाज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेटर्स. एंड ये लॉजिकली वो फॉर्मूला भी मैंने सिखाई थी. So I guess you should remember that now. Yes. बोलो बोलो. Credit sales into average collection period. Okay. Correct. Credit sales into average collection period divided by 12, 365, 52. Okay, can I say now for operating cycle period, which variable I want? Can I say I want to find ACP? ये तो इसी फॉर्मूला को इधर उधर करके कैन आई फाइंड एसीपी? ठीक है. सी इन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड द वेरिएबल दैट आई नीड इज एवरेज कलेक्शन पीरियड. एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड ये डेटर्स की फॉर्मूला में छुपा हुआ है ऑलरेडी. तो उसी फॉर्मूला को थोड़ा ट्रांसपोजिशन करके उल्टा सुल्टा करके कैन वी फाइंड एसीपी? Yes, so ACP is nothing but debtors upon credit sales into 12, 365, 52. Yes or no? Debtors turnover ratio, yes. And debtors turnover ratio में अगर आपको याद हो तो we used to take average debtors. Are you following everyone? So the formula to calculate ACP is nothing but average debtors upon credit sales into 12, 365, 52. Yes, Pooja, correct. Again, this is nothing but debtors turnover ratio. Are you following? Debtors turnover ratio means मैं पूरे साल में डेटर्स के पास कितने टाइम कलेक्शन के लिए जाता हूं. दैट इज डेटर्स टर्नओवर रेशियो. पूरे साल में हाउ मच टाइम आई गो टू डेटर्स ऑफिस फॉर कलेक्शन. That is debtors turnover ratio. Clear everyone? So no need to memorize or rectify the formula. You can derive. Are you following? Just transposition it. Do ulta sulta and you will get the variable that you need. Hey, everyone understood this? How the formula of ACP will be created. So can I say ACP is nothing but average debtors upon credit sales into 12, 365, 52. Clear everyone? Understood? Hey, so likewise,
if debtors are based on credit sales, applying same principle, applying same analogy, can I derive formula for APP? It is nothing but average creditors. Instead of credit sales, it will be credit purchases into 12, 365, 52. Understood everyone? So बातों में we learned formula for ACP, APP. ये formula क्यों सीख रहे हैं? Because let's say question में आपको ACP, APP नहीं दिया हो, so how to find that? So this is the formula that you will use. And you have already learned this in ratios chapter. Huh? APP is nothing but creditors turnover ratio. And what do you mean by creditors turnover ratio? पूरे साल में how much time you visit your creditor's office for making payment. Are you following? That is APP. So with same analogy, I can prepare formula, I can derive formula for FG holding period as well. Can I say first of all, FG would be based on not credit sales, not credit purchases, but COGS. Yes or no? Likewise, WIP would be based on cost of production. And likewise, raw material would be based on raw material consumption. Are you following? अच्छा इसमें भी इंटू 12 365 52 करना पड़ेगा. इसमें भी इंटू 12 365 52 करना पड़ेगा. इसमें भी इंटू 12 365 52 करना पड़ेगा. So 75% of the formula is created. See how sharp we are. We are deriving the formula. ठीक है? So now for ACP, the numerator was average debtors because collection period is linked to debtors. Can I say FG holding period? It will be average of FG stock. Yes or no? For WIP, it will be average of WIP stock. And for raw material holding period, it will be average of raw material stock. Clear? So this is how formula is created. The formula is just transposition to our original formula. हमारी original formula क्या थी? It was formula to calculate RM stock. It was formula to calculate WIP stock. It was formula to calculate FG stock. बस उसको ही उल्टा सुल्टा करके I derive the formula for the variable that I need. Are you following? Understood everyone. So to calculate holding period, you can take the screenshot of the formulas appearing in your screen. So no need to rectify or no need to memorize. Simple hai. Just derive it. Oh, written. You all are very fast. जिसने नहीं लिखा quickly take the screenshot. So can I say by applying this formula, our step 1 is done. We get all the holding periods, all the storage period. Step 2, gross duration. You sum up all the holding periods of current asset. You will get gross duration. उसमें से you subtract average payment period and you will get net duration or net operating cycle period. Understood? Okay. In 5, 4, 3, 2, 1, I will scroll down. Done? Okay, now let's try and solve one illustration from the module which is from working capital operating cycle period concept. So everyone come to unit 1 of management of working capital chapter, unit 1.
See, can you see the operating cycle period की formula? It is nothing but RM holding period plus WIP holding period plus FGA. These all are holding period. Huh? This is not value of FG stock. This is not value of RM stock वगैरह वगैरह. ठीक है? See, यहाँ देखो R means RM storage period. Clear? And number of operating cycle is 360 or 365 divided by operating cycle period. So that you will get in days. If you want to calculate in months, take 12 in the numerator. Clear everyone? Hey, unhone, if you see over here, the module has a formula called average stock of raw material. Hey, 360, you can assume a year of 360 days as well. Huh? That's fine. See, don't argue for 5 days. Okay? So if question says take 360 days in a year, so you take 360 days. Okay. See the formula that module has taken for RM storage period. Average stock of raw material divided by average cost of raw material consumption per day. ये मैंने क्या सीखा है आपको? मेरी फॉर्मूला तो कोई वियर्ड सी है. हाँ, न्यूमरेटर मैच हो रहा है. एवरेज RM स्टॉक. ठीक है, बट यहाँ पे तो आई हैव टेकन रॉ मटेरियल कंजम्पशन इनटू 12 365 52 एंड मॉड्यूल में तो ऐसा कुछ किया नहीं है. बोलो, is the formula in the module and the formula that I have given same? Yes, they have calculated per day basis. मतलब average consumption, raw material consumption divide by 12 they have done, divide by 365 they have done. Are you following everyone? So formula is same, but they have done on per day basis. Clear? मैं यहाँ पे per day basis नहीं ले रहा हूँ. Understood? So formula is same. Don't get confused. Okay, come to illustration 2 now. Let's try and solve illustration number 2, which is on the concept of working capital operating cycle. From the following information, you are required to calculate net operating cycle period, means net duration, and also calculate number of operating cycles in a year. Okay, so first we know net operating cycle period is nothing but RMHP, HP is holding period, plus WIPHP plus FGHP plus debtors का we say collection period. So ACP minus APP. Clear? Now my next question. Are the holding periods directly available in the question or some scattered, some other details are given and first we need to find holding period? बोलो क्या करना है? See, nowhere in the question I can directly see. हाँ, ACP और APP दिया है. ACP is 30 days, 45 days. APP is 30 days. So debtors and creditors are given. But for RM, WIP, FG, they have not directly given the holding period. So first we will calculate that and then substitute in our formula. Okay? Okay, so working note number 1. Calculation of RM. Either you term it as holding period or storage period. It is one and the same. I say the formula that we have learned is nothing but average of RM stock divided by raw material consumption in a year into, अच्छा days में करना है कि अच्छा number of days they have given, 360 days. ठीक है, so we will take 360 only. So I will multiply it with 360. Clear? Instead of 365. Okay, now check the question and tell me, have they given average stock of RM? Yes, already given 50,000. Can you see it? So 50,000. And how much is raw material consumption in that entire year? 6 lakh. Clear? So 50,000 divided by 6 lakh into 360. कितना आया? So this is RMHP in days.
50 divided by 6, 30 days. 21.99 can be rounded off to 30 days. It means now let's interpret 30 days क्या है? 6 lakh is the annual consumption. Are you following? Proportionate to 30 days, equivalent to 30 days of my annual consumption is the stock. Are you following, everyone? This is how you interpret. Clear? So RM holding period is done. Let's move to WIP holding period. So WIP holding period, average WIP stock divided by, and WIP is based on cost of production. I will multiply it with 360. Okay, average WIP stock is directly given. ये जो हमने एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल में सीखा था ना, इनटू परसेंटेज कंप्लीशन वगैरह वगैरह, वो सब करके नेट आपको दे दिया. इट इज वर्थ 30,000. ठीक है. सो 30,000. एंड हाउ मच इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द एंटायर ईयर? 5 lakh. Clear? So 30,000 divided by 5 lakh into 360. 21.6 days. So either you keep it 21.6 days, last में सारा round off करो, or you can also round it off over here and say कि this is approx to 27 days. ठीक है? Our normal 0.5 वाला rule. If it is above 0.5, round it off to upper amount. And if it is less than 0.5, you can round it off to lower amount. ठीक है? Or you can keep as it is. Last में सब plus minus कर, oh sorry, 22. Yes. और अनदर लास्ट में भी सब प्लस माइनस करके जो पॉइंट आता है उसको राउंड ऑफ करो. एनी इज करेक्ट. ठीक है. सो WIP होल्डिंग पीरियड इज 22 days. ठीक है. लास्ट वर्किंग नोट, अच्छा दिस वाज वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ WIP होल्डिंग पीरियड. वर्किंग नोट 3, calculation of FG holding period. So FGHP is average FG stock divided by, it is based on COGS into 360. So is FG stock का average given? Yes, 40,000. COGS is 8 lakh. $18 days. So FG remains in godown for 18 days before it gets converted to sales. Clear? Debtors and creditors are already given. So now I can calculate operating cycle period. $30 days was for RM, 22 days was for WIP, 18 days is for FG. Debtors का it is 45 days. Creditors का it is 30 days. 30 or 45 है ना? Yes, correct. So can you tell me net operating cycle comes to how much? 30 plus 30, 60 plus 40, 30 plus 40, 70, 115 minus 30. 85 days. It means entire cycle takes time of 85 days to get completed. मतलब जिस दिन से आपने पैसे भरे to buy raw materials, after 85 days that same cash will come with you with profit. ठीक है? Because debtor से पैसा मिलेगा तो it will be with sales with profit.
Clear? So tell me, is this cycle lower the better कि higher the better? क्या लग रहा है? ये साइकिल का पीरियड का समय जितना कम हो उतना अच्छा कि ज्यादा हो उतना अच्छा? यस, लोअर द बेटर. How quickly my money gets released, that is a good sign for the business. Are you understanding? So it means, in other words, this means my cash is blocked for 85 days. ठीक है? I want कि वो कम से कम टाइम ब्लॉक रहे. Followed everyone. So lower the better. Now can you tell me, can you calculate B part and tell me एक साइकिल को कंप्लीट होने में, टू कंप्लीट द एंटायर साइकिल इट टेक्स 85 days. So ऐसी हाउ मेनी साइकिल्स वुड बी देयर इन द एंटायर ईयर? So number of cycles in year 360 divided by net operating cycle period. 85. 4.24 cycles. मतलब in the entire year we will write this cycle of operating cycle for 4.24 times. 4.24 times हम ये साइकिल चलाएंगे पूरे साल में. ठीक है? And we will burn our calories. Understood? Understood concept of working capital operating cycle? Any doubts, any concerns, any clarity that you need? Calories was just a joke, was on a lighter note. So in other words, you can say higher the cycle you drive, the better, the faster you will release your working capital. Okay? So more the cycles, faster the burning of calories. More the operating cycle, faster the release of cash. This is how you can link it. Okay, now moving to next very important topic, not topic, but a concept where assumption number one. Hey, what was our standard assumption number one of this chapter? All activities accrue evenly throughout the year, correct? This assumption will now not hold true specifically for stocks, RM stock, WIP stock, FG stock. कौन से केस में that assumption will not hold true and how to approach that questions we will learn now. And very important, you need to catch from the question itself. Question will not specifically say कि in this question this assumption is not holding true वगैरह वगैरह. You have to catch that. You have to identify that. Following everyone. So let's understand that and try to solve one question. Come to unit number 6 of this chapter. Unit 6, last wala. Last unit consists a mixture of all सब चैप्टर्स. ये सब जितने भी यूनिट्स है ना, सब कॉन्सेप्ट्स को मिला के यूनिट 6 बनाया है. ठीक है? सो नाउ लेट्स कम टू यूनिट नंबर 6 and come to practical problem number 5. ठीक है? पेज नंबर 9.119. Page number 9.119. Okay, let's read. MA Limited is commencing a new project for manufacturing of plastic components. ठीक है? The following cost information has been ascertained for annual production of 12,000 units. So first of all, see this this practical problem has many unique points. ठीक है? So we need to catch. This is first unique point. Unique point number 1. The following cost information has been ascertained for annual production of 12,000 units, which is the full capacity. Sir, इसमें नया क्या है? ये नया ये है कि 12,000 is the full capacity. ठीक है? So it is not necessary or it is not compulsory कि उस फैक्ट्री में
12,000 यूनिट्स ही बने होंगे या प्रोड्यूस हुए होंगे. आर यू फॉलोइंग? कैपेसिटी इज 12,000 यूनिट्स. इट मे बी कि ईयर वन में 10,000 यूनिट्स ही बने हो. इट इज क्वाइट पॉसिबल कि 2,000 यूनिट्स ही बने हो. आर यू फॉलोइंग एवरीवन? सो दिस इज यूनिक पॉइंट नंबर वन. Catch number one, 12,000 units is the full capacity and not the actual production. ठीक है. अच्छा, next, for the production they have told us the following is the cost as certain. ठीक है. To produce these units, following is the cost as certain. Are you following? So if you look at the table very carefully, can I say admin expense here? It is a part of production cost. Yes or no? लिखा है ना. The following cost information has been ascertained for production. And here they have clearly included administration expense under production. Are you following? So this is not general admin expense. This is production related admin expense. So this was second unique point, that production overheads includes general administration overheads in this question. Following everyone? ये यहाँ तक clear हुआ? Okay, moving to third. Now moving to the further question. The selling price per unit is 96 and selling expense is 5 per unit. ये तो कहना ही से जनरल एडमिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. जितने भी एडमिन एक्सपेंस है वो सारे प्रोडक्शन रिलेटेड है. आर यू फॉलोइंग? सो इन दिस क्वेश्चन कैन आई से आफ्टर सीओजीएस ओनली सेलिंग एक्सपेंस विल बी देयर. ये सेलिंग एक्सपेंस आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन. वो सेलिंग से रिलेटेड होता है. ठीक है. सेलिंग एक्सपेंस आर ऑलवेज रिलेटेड फॉर सेल्स एंड प्रमोशन. दे आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन. ठीक है. सो सीओजीएस के बाद हम आइडियली एडमिन और सेलिंग दोनों ऐड करते थे, बट इस क्वेश्चन में वी विल जस्ट ऐड सेलिंग एक्सपेंस. व्हाई? बिकॉज एडमिन एक्सपेंस विल बी कंसिडर्ड विथ प्रोडक्शन ओवरहेड्स. क्लियर? अच्छा, 5 पर यूनिट इज सेलिंग एक्सपेंस. ये 5 पर यूनिट में 80% इज वेरिएबल, मींस 4 इज वेरिएबल एंड 1 इज फिक्स्ड. क्लियर? नाउ नेक्स्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट. In the first 2 years of operation, the production and sales are expected to be as follows. So first year mein production will be 6,000 units, although the capacity is 12,000. Huh? So can I say in year one we have just utilized 50% of the full capacity, correct? So 6,000 units बनाए, 5,000 units sell किए. So can I say closing stock would be 1,000 units. Clear? In year two, 9,000 units बनाए नए and 8,500 units are sold. Can you tell me how much would be closing stock for year two? Closing stock for year two. Hey, 500. Okay, Daksh is saying 500. Achal 500. Okay. Gayatri 1,500. Tannu 1,500. Pooja 1,500. Yes, 1,500 is correct. ए फर्स्ट ईयर में 1,000 यूनिट्स क्लोजिंग में पड़े हैं ना, तो 1,000 यूनिट्स वुड बी ओपनिंग फॉर नेक्स्ट ईयर प्लस द 9,000 न्यू प्रोडक्शन. सो टोटल 10,000 यूनिट्स लेस 8,500. क्लियर? सो इन ईयर टू क्लोजिंग वुड नॉट बी 500, इट वुड बी 1,500. ओके. नेक्स्ट, टू असेस द वर्किंग कैपिटल, following information is available. Stock RM holding period is 2.25 months. Ignore WIP. So we will ignore. Don't question the question. Question ने जो बोला ignore WIP तो ignore. Debtors 1 month average sales. Cash balance 10,000. Creditors for supply of materials. Can I say this is sundry creditors? APP 1 month's average purchase. And creditors for expense 1 month's average of all expense. Okay, what is this creditors for expenses? Can I say this is nothing but outstanding expenses? So all the expenses other than purchases are outstanding for a period of 1 month. Clear? Creditor means credit, outstanding. Understood? Prepare for the 2 years projected statement of profit and loss. Ignore taxation and prepare projected statement of working capital required for 2 years. Huh? Year 1, year 2. इट मीन्स दोनों साल के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है.
दोनों साल के लिए हमें एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाना है। टू द क्वेश्चन। ओके। ए कैन आई से हम जो कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद हम प्रॉफिट ऐड करके सेल्स लिखते ही है। सो इन अदर वर्ड्स आर कॉस्ट स्टेटमेंट इज नथिंग बट इनकम स्टेटमेंट ओनली। सो दे आर आस्किंग अस कि भाई जो आप वर्किंग नोट वन बनाते हो ना वो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। Understood? So the cost statement, the income statement is nothing but for us the statement of P&L. ठीक है? And cost statement के base पे we will calculate working capital required. First of all, understood the question. फिर मैं मेरा क्वेश्चन पूछता हूँ। Cash cost method या total cost method, nothing is mentioned. So also there is no direct hint given in the question कि this company is going to the bank for obtaining fundings वगैरह वगैरह. So we can follow whichever method we can use you want to use. And here since institute has taken total cost basis, even we will follow total cost basis. ठीक है? Okay. Now my question to you all. ये क्वेश्चन तो हमने समझ लिया बट नाउ माय क्वेश्चन टू यू ऑल फ्रॉम वेयर इज द हिंट दैट सेज स्पेसिफिक अजम्पशन नंबर वन इज नॉट होल्डिंग ट्रू ओवर हियर। बोलो कहां से हमें पता चला कि स्पेसिफिक अजम्पशन नंबर वन इज नॉट होल्डिंग ट्रू। ये तो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि दिस इलस्ट्रेशन is related to that concept where assumption number one is not holding true। ये तो मैंने बता दिया आपको, पहले ही सस्पेंस क्लियर किया, बट एग्जाम में मैं तो नहीं आऊंगा। Production is different in both the years. So in year one, can I say closing stock is 1,000 units? But assumption number one said कि opening stock भी उतना ही होगा ना 1,000 units. So opening closing same. So nil. So where is the hint that says कि specific assumption number one is not holding true? See here you said closing stock of FG at the end of year one is 1,000 units, correct? But I am saying कि opening में 1,000 units हुआ तो ये तो सेम ही हो गया ना opening closing. तो again the assumption is holding true. हाँ, Pooja is rightly catch the hint that is saying in the very first line, MA Limited is commencing a new project. ये जब नया प्रोजेक्ट नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, do we have any opening stock? Yes or no? Opening stock would always be nil if we start a new business, new project, correct? But year one में closing है. So can I say opening is different, closing is different? Assumption number one, all activities accrue evenly throughout the year does not hold true for stock. Understood, everyone? Are you following? So opening, हाँ. फिर year two में opening stock is 1,000 units, closing is 1,500 unit. Again, there is difference in opening closing for year two. Clear? So again, standard assumption number one, all activities accrue evenly throughout the year is not holding true for stock purpose. Clear? Because stock opening में अलग है, closing में अलग है. Understood? So this is the hint that you have to read, catch. कि न्यू प्रोजेक्ट है तो आंसर चेंज होगा, अब हमारा कॉस्ट स्टेटमेंट भी चेंज होगा। ओके, नाउ लेट्स प्रिपेयर आवर कॉस्ट स्टेटमेंट। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन 5 फ्रॉम मॉड्यूल। फर्स्ट स्टेप, दे हैव आस्क्ड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट बोलो या कॉस्ट स्टेटमेंट बोलो, हमारी जो कॉस्ट शीट है that itself is a illustration of income statement only, that is nothing but P&L only. Okay, so let's prepare that. Year one, for both the years they have asked, so year one, year two. Clear everyone? Any doubts? Okay, so this is per unit total, per unit total, raw material consumption,
Tell me how much is the number of units produced in year one. 6,000 units are the production units, and in year two it is 9,000 units. ठीक है. So year one में raw material cost is 40 rupees, 40 per unit. तो कहना है 6,000 into 40 rupees is our consumption of raw material for production. 5,000 is sales, हाँ. सेल्स 5,000 है, प्रोडक्शन तो 6,000 है ना. मींस 6,000 यूनिट्स मींस जो रॉ मटेरियल लगा होगा that would have been used to produce 6,000 units. Are you following? So how much would be raw material consumed, total raw material consumed for producing 6,000 units? 6,000 into 40, 2,40,000. Clear? फिर लेबर ऑल्सो इज पेड ऑन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड नॉट ऑन यूनिट सोल्ड. लेबर ने कितना यूनिट्स बनाया उस पे दे विल चार्ज लेबर कॉस्ट. फिर आपका सेल्स हो या ना हो, दे आर नॉट कंसर्न विद दैट. 6,424. ठीक है. ईयर टू बाद में करेंगे, फर्स्ट लेट्स कंप्लीट ईयर वन. डायरेक्ट लेबर, it is costing per unit 20 rupees. ठीक है. So labor will charge total of 6,000 into 20, 1,20,000. Yes or no? Now very important, fixed manufacturing expense. ठीक है. Tell me how per unit fixed manufacturing is how much? 6 rupees. Okay, so tell me total कितना होगा? How much would be total manufacturing expense? Yes, 6 into 12, 72. 72. Gautami 72. Arun 72. But here is your mistake. Mistake is fixed is always on full capacity. ए मान लो आपकी कैपेसिटी 12,000 यूनिट्स. ठीक है. लेट्स से दिस इज पूरे फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस. लेट्स से इट इज अ रेंट ऑफ फैक्ट्री. अब मान लो आपकी कैपेसिटी 12,000 यूनिट्स की है. अब उसमें से आप यू ओनली प्रोड्यूस 6,000 यूनिट्स. तो विल द फैक्ट्री ओनर से नो नो गिव हाफ रेंट? He will say, भाई I तो want पूरे फैक्ट्री का रेंट. Whether you produce, you utilize full capacity, you utilize half capacity, you don't do any production, it is not my concern. Are you following? I need rent for the entire factory. Understood? So when I say fixed cost, जितने भी fixed cost आएंगे, that will always be on full capacity, followed and not on units produced or units sold वगैरह वगैरह. Clear? So can I say this always fixed cost is always on full capacity? So here students ideally do mistake. 12,000 is the full capacity into 6. 72,000 will be fixed cost. And now tell me, just for general knowledge, next year may we are producing 9,000. So will this amount change or it will remain fixed? It will remain fixed in next year as well. Are you understanding? Because naam hi hai fixed expense. Whether you produce 6,000 units, 9,000 units, you don't do any production, this will remain fixed. Clear? फिर next is depreciation. Since we are following total basis, we will include depreciation. बोलो, depreciation per unit is 10. Tell me, depreciation, how much would be depreciation in rupees? 1,20,000. Yes, Gautam is correct. Depreciation again on full capacity. See, your machine can produce 12,000 units. Okay? But in first year, you have only used 6,000 units. You have only produced 6,000 units. But can I say machine to pure machine pe we will depreciate. So again, depreciation on full capacity. So this will again be 12,000 into 10. 1,20,000. Okay? Then ideally we don't add admin expense. We just total it and write it as gross factory cost or cost of production. Okay? But here, since admin expense is also a part of cost of production, total cost of production is 80. उसमें 4 रुपया admin का है. तो हमें admin को production overheads में लेना पड़ेगा. So fixed
production related admin expense. This is how I will write. And again, this is a fixed cost, so it will be incurred on 12,000 units into 4. So 12, 4, 48. Correct. So can I say my gross factory cost? My gross factory cost comes to how much rupees? So it comes to 240 plus 120, 360 plus 120, 480 plus 70, 550 plus 590, 6 lakh. Yes, 6 lakh. Okay. Now, after gross factory cost, what have we learned in cost statement? We add opening WIP, we subtract closing WIP, and we get cost of production. Clear till here? But in this case, the question is directly, specifically saying ignore WIP. So can I say I will ignore this nil, and my cost of production will be 6 lakh. Clear everyone? Now very important. Can I say this 6 lakh is for production of 6,000 units? Yes or no? Yes or no? 6 lakh or cost of production is 6 lakh. But cost of production 6 lakh is total. For how much units? 6,000 units. Correct? इसमें can I say cost sheet में we have learned after cost of production we add opening FG less closing FG and we get cost of goods sold. Clear? A opening FG is nil because company is newly started. But can I say there is some closing FG in units? Correct? So how much would be the value of closing FG stock? 6,000 यूनिट्स बनाने के लिए 6 लाख उसमें से 1,000 यूनिट्स आर क्लोजिंग स्टॉक आर इन गोडाउन तो कहना है 1 लाख ऐसा ना जस्ट सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और अ वेरी नॉर्मल लॉजिक 6,000 यूनिट्स बनाने का कॉस्ट वाज 6 लाख इसी 6,000 में से फ्रॉम दिस 6,000 यूनिट्स 1,000 आर हेल्ड इन गोडाउन तो कहना है 1 lakh rupees का स्टॉक इज इन गोडाउन. Clear? So 1 lakh, I will subtract it over here. Everyone understood the logic of 1 lakh? And this you have already learned in cost sheet. Huh? Nothing new. So can I say my COGS, cost of goods sold. A goods sold is 5,000 units. तो उसका proportionate cost 5 lakh आ गया. Clear? जो goods हमने बेचा है उसका cost कितना हुआ होगा 5 lakh. Clear everyone? Understood this? The logic behind cost sheet. So in this question, if you see COP and COGS is different, and had it been WIP as well, so factory cost and production would have been different. Clear? So this is a new twist in this sum, where standard assumption number 1 does not hold true for stock. Then prepare the normal format of cost sheet because cost of production COGS will be different and even gross factory cost and cost of production might be different if there is some value of WIP as well. Clear? इसमें इग्नोर करना था इसलिए कर दिया. अब COGS के बाद ideally we add admin expense plus selling expense. Correct? But admin is already a part of production, so we will just add selling expense. And selling expense, we know it is 5 per unit. Okay, 5 per unit. But उसमें भी breakup is there. Variable, fixed. Some portion is fixed, some portion is variable. Can I say 4 rupees is variable, 80%, and 1 rupee is fixed? बोलो सेलिंग वेरिएबल एक्सपेंस कितना होगा टोटल वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस नाउ विल वी डू 6,000 into 4 कि सेलिंग एक्सपेंस इज ऑलवेज ऑन सेल्स यूनिट सेलिंग एक्सपेंस इज टू बी कैलकुलेटेड ऑलवेज ऑन सेल्स यूनिट ठीक है जितना सेल किया उतना हम कमीशन देंगे अज्यूम दिस वेरिएबल इज नथिंग बट सेल्स कमीशन
तो मार्केटिंग वाले जितना सेल्स करेंगे उतना कमीशन मिलेगा. सो कैन आई से दिस विल बी 5,000 इंटू 4, 20,000. Yes or no? And fixed cost is always on full capacity. Yeah? Fixed cost will not change with the number of units. Yes. Fixed cost will remain same. So this will be 12,000 into 1. 12,000 into 1. So this comes to 12,000. And if we add selling expense to COGS, I will get cost of sales. So it is 5 lakh plus 32, 532. Sales amount. How much is selling price per unit? It is 96 rupees. So can I say sales will be 5,000 into 96? कितना आया सेल्स का अमाउंट? 5,000 into 96. 4,80,000. So in year one, can I say we have incurred loss? Loss, I will write it in bracket. Okay? 480 minus 532. How much is the loss? 52. 52,000 is the loss in year one. Clear everyone? Understood the income statement? This is our profit and loss statement. ठीक है? अब T फॉर्मेट में बनाओ या कॉस्ट शीट समरी से बनाओ. At the end you get the profit figure. At the end you got the sales figure. At the end you got COGS. Everything you got. Clear? So year one, everyone understood? A detailed cost sheet बोलो या income statement बोलो. Any doubts, any concerns for year one? Because if year one is not clear, we cannot start with year two. Huh? So year one has to be clear. Okay, no response. I will move to year two now. Okay, year two में production is 9,000 units. And can I say raw material per unit is remaining same? So 9,000 यूनिट्स बनाने के लिए टोटल रॉ मटेरियल कितना यूज हुआ होगा? 9,000 into 40. Can I say 360? Again, raw material consume, labor वगैरह is on production, always on production. जितना काम हुआ, जितना प्रोडक्शन हुआ, उतने मटेरियल्स यूज हुए होंगे, उतने वेजेस होंगे. क्लियर? In year two, wages per unit is same. So now instead of 1,20,000, they would be earning 1,80,000. जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा वेजेस. But fixed manufacturing overheads will remain same. The value of fixed manufacturing overheads will remain same. 9,000 यूनिट्स बनाओ, 6,000 बनाओ, 12,000 बनाओ, कुछ ना बनाओ, फिक्स्ड ही रहेगा. फैक्ट्री का भाड़ा, फैक्ट्री रेंट उतना ही जाएगा. Clear? Okay, so if 72,000 is the total fixed manufacturing overheads and 9,000 is the units, can I say per unit change हो जाएगा? Just if I want to calculate per unit, so this will change now. हाँ, 8 rupees. 8 कैसे? 72 divide by 9. हाँ, okay. 72 divide by 9. 8. ठीक है? Clear till here? एडमिन एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड. तो अगेन ये 1,20,000 का 1,20,000 रहेगा. 1,20,000 डिवाइड बाय 9 करो तो कितना आ रहा है? जस्ट इफ आई वांट टू सी, आई एम कंटिन्यूइंग विद द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉर्मेट. है यहाँ पर यूनिट किया है तो यहाँ भी फिर पर यूनिट कर ही दू ना. आर यू फॉलोइंग? ए दिस इज सॉरी 72,000 डिवाइड नॉट बाय 9,000, डिवाइड बाय 12,000. Full capacity na, so this will be 6 only. Correct? So here I am writing 12,000 into 6. Clear? This 6 per unit has to be applied on 12,000. Everyone?
and here again 10. Okay, and this 10 is to be applied on 12,000 units. Clear? A 10 per unit is applied on 12,000 units. Are you understanding? Okay. What is this? Fixed admin 4 per unit. So again, admin will be 48. So again, this 4 per unit is applied on full capacity. A full capacity है. And not on units produced. Clear? So my gross factory cost comes to, why are we taking 12,000 units? Because fixed expenses are always incurred on full capacity. उसके लिए 12,000 units ले रहे. So this comes to 7,80,000 units. Okay? So 780 is my gross factory cost. Per unit आप एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा. This is just I've already written, so I just want to maintain that consistency. WIP opening closing nil. So 780 is the cost of production for producing 9,000 units. Say yes or no? 9,000 units बनाने का खर्चा जो 9,000 units we are producing in year 2, it is costing us 7,80,000. Now tell me, year 2 में will there be any opening stock? Yes. So there will be opening stock of 9,000 units. And the value of this opening stock, can I say 1 lakh था? Year 1 का closing becomes year 2 का opening. Yes or no? Are you following? So, can you tell me the weighted average cost to produce 10,000 units? So, total units are 10,000 units and its total cost is 8,80,000 units. Yes or no? 1000 यूनिट्स ओपनिंग के जिसका खर्चा 1 लाख था, नया यूनिट्स 9,000 बनाया उसका खर्चा 780 आया, तो टोटल जो 10,000 यूनिट्स फिनिश गुड्स जो पड़े थे उसका 880 इज द कॉस्ट. आर यू फॉलोइंग? एंड इन ईयर 2 कैन आई से माय क्लोजिंग स्टॉक इज 1500 यूनिट्स? यस और नो? Everyone, in year 2 my closing stock is 1500 units. And in short, I am getting goods sold of 8,500 units. Clear till here? So how much would be the value of my FG stock in year 2? 10,000 units का total average is 880. उसमें से 1,500 units are in stock. Are you following? So what would be the value? 132. Can I say 130 ki 132? 132. So can I say here to value stock I have used weighted average method? Yes or no? यहाँ पे हमने टोटल कर दिया 10,000, टोटल जो 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए होंगे 1,000 ईयर 1 में और 9,000 ईयर 2 में, उसका टोटल कॉस्ट इज 880. उसमें से फ्रॉम दैट 1,500 आर इन स्टॉक. So on an average, what is the value of that closing stock? So I have used weighted average method. And someone can argue, sir, FIFO method is also allowed. Are you following? Yes, so you can use FIFO method as well. FIFO means, can I say, ye 1,500 units would be from this latest 9,000 units produced? Are you following? So 9,000 units production cost is 780. तो एक यूनिट बनाने का खर्चा कितना हुआ होगा? 780 डिवाइड बाय 9,000, 86.67. उसमें से 1,500 यूनिट्स आर इन स्टॉक, सो 1,30,000. So Gautam, he was getting 1,30,000. So I guess she had followed FIFO basis. Yes, correct. So FIFO basis use करोगे तो 130 आएगा. Understood? So both the methods are correct, but in the present solution, institute has followed weighted average. So we will write a note at the end. But did you understand the difference? FIFO method, if we follow this 1,500 units would have been in stock from this latest production of 9,000. Clear? Okay, so this comes to
कितना आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 1,32,000 ठीक है. सो 880 into 1,500 divided by 10,000, 1,32,000. So this is the value of closing stock in year two, and my COGS comes to 7,48,000. Clear? Selling expense. Again, in year two, can I say I've sold 8,500 units and variable selling expense is 4 per unit. So 8,500 into 4 would be variable selling expense for year two. कितना है 46,000. If fixed will remain fixed, ये तो 12,000 ही रहेगा. 12,000 into 1. ठीक है. And this 1 per unit, again I am repeating, is applied on full capacity because it is a fixed cost. Are you following? Full capacity pe. Clear? So my total cost of sales comes to 748 plus 46 plus 12, 8,06,000. 85,000 into 4. 85,000 तो कहीं पे भी 8,500 है. तनु, it's 8,500. So this comes to 8,06,000, I guess. Total cost of sales. Sales unit is 8,500 and selling price is 96. So 8,500 into 96. 8,16,000 is your sales amount. 8,500 into 4. How much it is? Hey, आपने ही 46 बोला. I've taken that. 8,500 into 4. Yes, it's 34,000. So someone said 46. This is 34. प्लीज हमें जो समय पे जो कॉस्ट का कैलकुलेशन आई एम आस्किंग यू, जस्ट डू दैट ओनली. सो 748 plus 34 plus 12. Okay, that student was trying to say total selling expense. बट ऐसा नहीं, जो पूछ रहा हूं जिस समय उस समय आई जस्ट आस्क calculate and tell me variable selling. So you should have given me that figure only. 816. So 22,000 is the profit in year two. ठीक है. Year one में loss, year two में profit. Clear? So with this, we complete part one of this question. Prepare profit and loss statement. Year one में loss 52, year two में profit 22. Any doubts in this? And any doubts why admin expense was taken under administration, was taken under production overheads? Any doubts why we have separated opening FG, closing FG in this question? आगे के क्वेश्चन में नहीं किया था, इसमें क्यों ऐसा कर रहे हैं? Why the format has been twisted here? All clear, everyone? So once our base, our source document is ready, can I say up to estimation of working capital is very fast now, very fast task. हाँ बोलो गौतमी, what is the doubt? First of all, I will write a note. Closing stock of FG is valued using weighted average method. Alternatively, FIFO method can also be used. ठीक है. Hey, how to know question is silent? You are free to use whichever method. इसलिए नोट लिख रहा हूं मैं. Question is silent if now the ball is in our court. ठीक है. So, but whatever method, whichever method you follow, just clarify through a note so that examiner, the paper checker, understand. Okay, इसने closing stock WACC method से किया है, weighted average method से किया है. ठीक है. And he also knows कि इसमें FIFO भी apply हो सकता है. Understood? So now let's move. अच्छा, before moving to estimation part, quickly take the screenshot if you want to take it for part A.
अरे यार क्या हो गया. Yes. So from here it starts. 5, 4, 3, 2, 1. Hey, why it is not scrolling? Okay. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Now moving to next part, estimation of working capital required. Okay. So first, in that case, what was step one? Prepare the format. Be ready with the format. Estimation of working capital required. ठीक है. अगेन 2 साल के लिए बनाना है. ईयर 1, ईयर 2. ठीक है. Format is first A, current assets. So you can start preparing the format along with me. उसमें नंबर 1 स्टॉक. उसमें नंबर 1 RM स्टॉक. ठीक है. स्टॉक ऑफ RM. ये WIP has to be ignored. So I'm not writing WIP. Directly coming to FG. ठीक है. Then नंबर 2 debtors. नंबर 3 कैश एंड बैंक बैलेंस. नंबर 4 अदर करंट असेट्स जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, प्रीपेड एक्सपेंस हो, वगैरह वगैरह. ठीक है. बट नो प्रीपेड एक्सपेंस, नो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. टोटल विल गिव मी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. ओके. देन करंट असेट में वी विल सब्ट्रैक्ट करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज में नंबर 1 क्रेडिटर्स एंड नंबर 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. इसमें सारे एक्सपेंस है, जितने भी एक्सपेंस, बीट सेलिंग, बीट एडमिन, बीट मैन्युफैक्चरिंग, सारे इसमें हम लिख देंगे. ठीक है. एंड देन वी गेट एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज. वी एड सेफ्टी मार्जिन एंड वी गेट net working capital required. Net working capital required. Oof, we are ready with the format. Let's see if there is any safety margin given in the question. Safety margin कुछ भी नहीं है, तो we have to ignore this as well. Okay, now let's start with RM stock for year 1. बोलो फॉर्मूला सबसे पहले क्या थी to find RM stock? It is nothing but raw material consumption into RM holding period. Since in this question everything is in months, we will divide it by 12. में how much is my RM consumption? 2,40,000. Yes or no? My consumption is 240 into how much is average RM holding period? 2.25. So 2,40,000 into 2.25 divided by 12. 45,000 everyone.
Sir, please re-explain variable. Amar, you should ask when that thing was going on. Now we have moved 10 minutes after that and you are asking variable for year 2. Let me explain that again now. जब वो पॉइंट पे होता हूं ना तब वो पॉइंट आप पूछा करो. अब 10-15 मिनट में आगे आ गया है नाउ अगेन यू आर आस्किंग. दैट इज नॉट डन एक्चुअली. इट ब्रेक्स द लिंक ऑफ द प्रोफेसर. इसलिए आई ऑलवेज क्लियर हुआ. इफ यू हैव एनी कंसर्न आस्क. बट वो टाइम पे आप नहीं पूछते. सो इट रियली ब्रेक्स द लिंक एंड इट इज फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द प्रोफेसर देन. ओके. Variable cost is always a variable selling expense. Selling expense, first of all, you should know कि selling expense is always on number of units sold. Okay? So in year 2, how much are the number of units sold? It is 8,500 units. 8,500 units, correct? And how much is variable selling expense per unit? 4 rupees. तो 8,500 यूनिट के लिए हाउ मच वुड बी सेलिंग एक्सपेंस? इट वुड बी 34,000. 8,500 into 4. It is as simple as that. Clear? Or you still have any doubts in that? Because if I move forward, then I cannot come back again because it breaks the link. Clear? Okay. Okay, so in year 1, RM consumption is 2,40,000. Average RM holding period is 2.25 months. So can I say 45,000 in year 1? Yes or no? And in year 2, how much is my RM RM consumption? Total raw material consumption. Check your cost sheet. It is 3,60,000. 2.25 months divided by 12. 67,500. Yes. So in year 2, it is 67,500. Clear till here? बोलो RM स्टॉक कैलकुलेट करने में किसी को कोई क्वेरी है तो आस्क राइट नाउ. Sure, everyone. Can I move to FG stock now? Just quickly respond in the chat box. Yes, okay. I'm moving forward now. FG stock we have already calculated in our cost sheet. Can I say this 1 lakh was nothing but closing FG stock की value in year 1? And in year 2, closing FG stock was 1,32,000. So can I say we have already found from cost statement 1 lakh and 132. Clear? Directly from cost sheet. Year 1 का closing FG value was 1 lakh. That is nothing but FG stock value. Year 2 में closing FG was, that was nothing but year 2 का FG stock value. Clear? Again, now debtors. Okay, any doubts in FG? Students? Any doubts? Okay. Amar, clear? How the values are derived? Clear? See, students, don't feel bad. You should also understand our concerns because हम जब आगे बढ़ जाते हैं 10-15 मिनट तो the link of that gets broken up. ठीक है? So try avoiding that. Okay, then we have cash and bank balance. Cash and bank balance, they have already said कि maintain cash and bank balance of 10,000. Okay, debtors बाकी है, sorry. Debtors, what is the formula to calculate debtors? Can I say it is nothing but credit sales into ACP divided by 12. So how much is sales in year 1? It was 4 lakh. कितना था? 4 lakh 80,000. Sales is 4 lakh 80,000. And collection period from debtors is 1 month. Clear? So 480
divided by 12. 40,000 is my value of debtors for year 1. Year 2 में sales कितना है हमारा? Sales is 8,16,000. So 8,16,000 divided by 12. 68,000. Yes. Everyone clear how debtors are calculated? How the values of debtors are arrived? ACP is average collection period. Since yesterday I am repeating this. ACP is average collection period. And for creditors, average payment period, APP. So that's why I repeat again and again. ACP average collection period, APP average payment period, FG finished goods, RMC raw material consumption, WIP work in progress. Cash bank balance, they have already told us to maintain 10,000. So this 10,000 means for both the years. At any time, if you see your bank balance, it will reflect amount of 10,000. This is what they are trying to say. So my gross working capital for year 1 comes to how much rupees? 45 plus 1 lakh. 145 plus 40, 185. 195 आया. For year 2, 67,500 plus 132 plus 68 plus 10, 277,500. Are these values correct? You all check. Creditors पे तो अभी मैं पहुंचा भी नहीं हूं. Creditors is still left. Debtors, what is the formula to calculate debtors? You only tell me now. Achal, tell me, what is the formula to calculate debtors that we have learned yesterday? क्या है debtors की formula? Now type, I am asking you something. And the formulas that I have given yesterday's class, in yesterday's class. So open that page and see what is the formula for debtors. Credit sales into average collection period divided by 12. How much is credit sales in year 1? It is 4,80,000. And how much is collection period from debtors? 1 month. So 480 into 1 by 12. This is how we calculate debtors. In year 2, it is sales are 8,16,000 into 1 by 12. यहाँ पे कैश सेल्स कितना प्रपोर्शन है ये सब बोला नहीं है. सो एंटायर सेल्स इज अज्यूम टू बी ऑन क्रेडिट. सो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज डन. नाउ लेट्स कम टू creditors. First of all, tell me what is the formula to calculate creditors? Credit purchases into average payment period. APP is called as average payment period or credit allowed by suppliers to us. ठीक है, divided by 12. So try. All the students please try. How much is my credit purchase? सर हमने creditor से raw material लिया होगा. So raw material is 2,40,000 for year 1 and 3,60,000 for year 2. So 240 into APP given in the question is how much? 1 month. Credit allowed by supplier is 1 month. For year 2, sir, raw material 360 है into 1 by 12. कितना आया? 20,000 and 30,000. Everyone, are you getting this figure? Gautami 20. Yes, for year 1, Gautami आपका 20,000 आया. मेरा भी यहाँ पे 20,000 आ रहा है. ओके, अदर स्टूडेंट्स, ये एक्सपेंस अलग से लिखेंगे.
एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अलग कर रहे हैं. फॉर नाउ ओनली क्रेडिटर्स. अमर 2030. 5625. Gautami 5625. I don't know from where this amount you are getting, but anyways, 2030. Everyone is getting 2030. But now we have done mistake over here. See, 240 and 360 can be taken as credit purchases only when standard assumption number one holds true. But I told you in this question, standard assumption number one, as far as stocks are concerned, be it RM, WIP, FG, it is not holding true. Okay? So here the purchase amount will change. How it will change? जो कॉस्ट शीट में हम अमाउंट लिखते हैं ना, दैट इज मटीरियल कंज्यूम्ड. आर यू फॉलोइंग? हाउ डू वी कैलकुलेट मटीरियल कंज्यूम? कैन आई से इट इज नथिंग बट ओपनिंग आरएम प्लस परचेज कुछ किए होंगे वो ऐड करेंगे, लेस क्लोजिंग आरएम will give me raw materials consumed. Yes or no? And in our cost sheet, we always write the raw material consumed amount. Are you following everyone? So can I say 240 and 360 is not the actual purchases? That is the amount of consumption. But इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम यही अमाउंट क्यों लेते थे 240 और 360? बिकॉज RM opening and RM closing were same. So 240 was my purchases amount. Are you following? जितना purchase उतना consume. Are you following? That's why it was same. But ideally, creditors are not based on consumption. They are based on purchases. Clear? So here, opening and closing RM is not same. Can I say purchases will be different now? First of all, did you get this clarity? कि यहाँ पे हम purchases का amount 240 और 360 क्यों नहीं लेंगे? That is clear? Okay, clear. So can I say opening RM is nil for year one? But closing RM we just calculated in our estimation. It is 45,000. Yes or no? Year one का RM stock कितना आ रहा है? 45,000. So in other words, my purchases would have been 285. उसमें से 45,000 RM के स्टॉक पड़े हैं. So consumption कितना हुआ होगा? 240 का हुआ होगा. Are you following everyone? Closing of year one will become opening of year two. So 45,000 opening in year two. And how much is closing RM stock in year two? It is 67,500. Clear? Year two का RM stock कितना पड़ा है? 67,500. So tell me how much would be the amount of purchases in year two? So 360, go reverse now, plus 67,500 minus 45,000, 382,500. Year 2 में 382,500 आया सबका. So when standard assumption number one does not hold true, then it does not hold true for all the type of stock, be it RM, be it WIP, be it FG. ठीक है? So RM purchase and RM consumption will now be different. Clear everyone? So now can I say my creditors be 285 into 1 by 12, and for year 2 it would be 382,500 into 1 by 12. 31,875. 285 divided by 12, 23,750. Is everyone getting the same answer? 23,750, 31,875. Okay. So let's consider this as working note number one. Calculation of RM purchases and creditors का amount. ठीक है, दोनों साथ में हमने ढूंढ लिया. So 23,750, 31,875. 23,750
23, 750, 31, 875. ठीक है, फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 1 we calculated the amount of creditors. Any concerns how creditors are calculated? Any query? So जो भी हो creditors तक अब भी पूछ लो. Just go through the format and still if you have any queries till creditors ask me right away. Clear. Daksh clear. Tanu clear. Other students you please respond. Clear. Okay, I guess clear to rest all as well. Now outstanding expense. Hey, पहले तो tell me, have they specified कौन से expenses are outstanding or they have directly said for all the expenses? So can I say in short, all the expenses other than purchase? See, purchase के लिए creditors हो गए. उसके अलावा जितने भी खर्चे वो सारे outstanding for 1 month. Yes or no? So in other words, let's prepare working note 2 for outstanding expense. Year 1, year 2. परचेज के अलावा सारे एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग. ये परचेज के अलावा लेबर कॉस्ट होगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होंगे. ये सब नो. सी नाउ बीट फिक्स और वेरिएबल वो सारे आउटस्टैंडिंग है. अंडरस्टूड? ऐसा नहीं कि फिक्स्ड एक्सपेंस ओनली विल बी आउटस्टैंडिंग फॉर 1 मंथ और ऐसा नहीं कि सिर्फ वेरिएबल विल बी आउटस्टैंडिंग फॉर 1 मंथ. दे हैव सेड ऑल एक्सपेंसेस आर आउटस्टैंडिंग फॉर 1 मंथ. बट लॉजिकली सोचो, क्या डेप्रिसिएशन आउटस्टैंडिंग होता है क्या? इज डेप्रिसिएशन पेड इन कैश और इट इज अ नॉन कैश? सो कैन आई से देयर इज नो पॉइंट ऑफ आउटस्टैंडिंग. सो डेप्रिसिएशन यू डोंट इंक्लूड. स्टूडेंट्स यहाँ भी मिस्टेक करते हैं कि दे टेक डेप्रिसिएशन एज वेल. अरे बट वो है ही नॉन कैश, वो क्या आउटस्टैंडिंग होगा? क्लियर? सो यू हैव टू इग्नोर डेप्रिसिएशन. अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग के बाद एडमिन था, दैट विल आल्सो बी आउटस्टैंडिंग. सेलिंग था, दैट विल आल्सो बी आउटस्टैंडिंग. क्लियर? सो ये सारे चारों एक्सपेंस विल बी आउटस्टैंडिंग. बोलो, हाउ मच इज टोटल लेबर कॉस्ट इन ईयर 1? जस्ट सी द कॉस्ट स्टेटमेंट एंड गिव रिप्लाई. हाउ मच इज 1,20,000. ईयर 2 में लेबर कितना था? 1,80,000. ठीक है. अच्छा, हाउ मच इज फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इन ईयर 1? 72. This, since this was fixed, it remains same. Admin was fixed. Yes. Admin was how much? 48,000 for both. Okay, now for selling expense, you add variable and fixed. ना दोनों add करना. Selling में variable and fixed both has to be added because both would be outstanding for 1 month. 32 and 46. So my total expenses for year 1 comes to 120 plus 72 plus 48 plus 32. 2,72,000. And in year 2 it is 180 plus 72 plus 48 plus 46. 3,46,000. So can I say my outstanding expense would be proportionate to 1 month of above total? It is outstanding. So 272 into 1 by 12, 346 into 1 by 12. सी, ये मैं वर्किंग नोट में इसलिए बना रहा हूं ताकि ओरिजिनल फॉर्मेट मैसी ना लगे, वरना आप ये चारों उधर ओरिजिनल फॉर्मेट में भी बना सकते हो. यू कैन कैलकुलेट दिस entire working in our original statement as well. But just because it doesn't look messy, I am using working note. So 22,667 for year 1 and for year 2 28,833. 833. 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 833
Clear everyone for outstanding expense as well? Any doubts in working note 2 calculation of outstanding expense? आगे बढ़ू 22667. So working note number 2. So the formula is outstanding expense into outstanding period into lag period divide by 12. 22667, 28,833. And this we calculated from working note 2. So this is a good practice. Huh? You should give reference of working note as well in your original solution. कि भाई ये amount आप कहाँ से derive कर रहे हो? So you give reference कि sir हमने working note 2 से derive करी. So this creates a good impression to the examiner if you give reference of working note. जैसे accounts में होते हैं ना notes to accounts. That is nothing but references from where the amount on face of balance sheet and P&L are derived. Okay, so my अरे बाप रे मैंने बहुत नीचे लिखा द एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटीज हाउ मच 195 minus 23,750 minus 22,667 148,583. So this comes to 148,583, and for year 2 it is coming to 277,500 minus 31,875 minus 28,833. 216,792. 216,792. In absence of safety margin, ignore. My final working capital for year 1 would be 148,583. And for year 2 it would be 216,792. The reason being year 2 में प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं तो खर्चा ज्यादा लगेगा रॉ मटेरियल वगैरह. सो वर्किंग कैपिटल वुड बी हाई. क्लियर एवरीवन? कैन यू सी प्रॉफिट लॉस इन ईयर 1 52,000 इन द सोल्यूशन. जो हमारा भी लॉस ही आ रहा था 52 एंड ईयर 2 में प्रॉफिट है 22,000. जस्ट द फॉर्मेट माइट बी लिटल हियर एंड देयर. ठीक है, और नोट भी लिखा है. इफ यू सी क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट एवरेज स्टॉक अवेलेबल. क्लियर? ऑल्टरनेटिवली हमने भी नोट लिखा इट कैन बी वैल्यूड ऑन सेल्स एज वेल. सॉरी सेल्स क्या फीफो मेथड एज वेल. कैन यू सी द फाइनल आंसर? एग्जैक्ट सेम. क्लियर? Okay, one more working note. It is calculated on total basis. Huh? Final note. Working capital required. This is note number 2. Is calculated using total basis. Clear? Alternatively, it can also be calculated on cash cost basis. क्लियर? कैश कॉस्ट बेसिस में डिफरेंस कहा जाएगा तो डेप्रिसिएशन को आप हटा देना. फ्रॉम ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट यू रिमूव डेप्रिसिएशन. Second, you remove profit to calculate debtors. ठीक है? So debtors will be based on cost of sales instead of sales. Understood everyone? Clear? ठीक है? So yes, solution में वर्किंग स्टाइल में भी डिफरेंट है. वर्किंग स्टाइल में भी डिफरेंट बट सब आंसर सेम आएंगे. दिस इज वर्किंग नोट फॉर क्रेडिटर्स ऑफ सप्लायर्स जो 285 382 आ रहा था ना. द स्टाइल में भी डिफरेंट.
फॉर्मेट में भी डिफरेंट बट आंसर, हाँ बोलो, व्हाट इज योर डाउट? हाँ सी फॉर कैलकुलेटिंग, सी इन दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट एज वेल, तो हमारा स्टेटमेंट विल एंड because they have specifically said calculate profit and loss. But for estimation of working capital, उसमें जो डेटर्स होता है, for that you take cost of sales and ignore the profit. That is what I'm trying to say. Here they have specifically said कि भाई profit and loss भी ढूंढो, तो our format will end at sales only. But to calculate the value of debtors, you ignore the profit element and value it on cost of sales. So understood when the specific assumption number one does not hold true. ठीक है? एंड स्टूडेंट्स को ना ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन टफ लगते हैं, उनको ये समझ में ही नहीं आता, क्योंकि उनको क्या लगता है कि एक क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग इज सेम, अब सडनली फॉर्मेट क्यों चेंज हो गया, why the format is getting changed, opening closing क्यों आ गया format, they get confused but they don't understand कि भाई the logic is this कि opening closing will be different because company is starting a new business. So by default a rational assumption कि भाई if you are starting a new business there would not be any opening stock but definitely there would be some closing stock. So assumption number one has to not hold true over here. Understood? It will definitely not hold true over here. बट स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको ये चैप्टर इसीलिए टफ लगता है. दे डोंट स्टिक टू द बेसिक्स, दे अंडरस्टैंड कि यार इसमें एक में ऐसा फॉर्मेट करवा दिया, दूसरे में ऐसा फॉर्मेट करवाया, ऐसा क्यों. सो देन दे ट्राई टू रेक्टिफाई कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया तो यूज फॉर्मेट टू, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया यूज फॉर्मेट वन. बट दैट इज रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग. यू स्टिक टू द बेसिक्स कि भाई रीजन क्या है, लॉजिक क्या है बिहाइंड दैट. Okay, I hope everything is clear now. Do you want to take screenshot of this format, our original table? Okay. So from here the table starts. Year one, year two. Okay? Estimation of working capital. So in 5, 4, 3, 2, 1, I'm scrolling the sheet down. 5, 4, 3, wait. 5, 4, 3, 2, 1. Five, four, three, two, वन. थोड़ा गैप ज्यादा छोड़ दिया है, ठीक है, बट नो वरीज. 5, 4, 3, 2, 1. Now let's come to working note number 1. 5, 4, wait. Ah. Working note number 1. 5, 4, 3, 2, 1. This is working note number 1. Working note number 2. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. And last note that we have followed, total basis. Alternatively, we can calculate on cash cost basis. Understood? So in a very comprehensive format, we have learned how to estimate the amount of working capital. Amount of working capital कैसे calculate करते हैं? Since last 1.5 session, we are calculating, we are understanding, and I hope now it is clear
सो नाउ लेट्स से ईयर 1 में इसमें आंसर आया था 148,583. सो दिस इज आर एस्टिमेट कि हमें ईयर 1 में वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड वुड बी 148,583. Now let's come to next step. How to finance this? How to fund this? Are you following? So next step, next concept is financing of the working capital. A theoretical concept, not practical, but इस पे theory पूछ सकते हैं. So let's learn. Financing of estimated working capital required. ठीक है. So first of all, working capital can be classified into two types. There are two types of working capital. One is permanent working capital. WC is working capital. Permanent बोलो या fixed working capital बोलो. And other is temporary working capital, or you can term it as variable working capital. Okay, so first of all you need to classify it into these types, into these two types. क्या आपका वर्किंग कैपिटल परमानेंट वर्किंग कैपिटल है या टेम्पररी वर्किंग कैपिटल है? सर अब परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, टेम्पररी क्या होता है, ये कैसे हम समझे? कैन यू ऑल ट्राई? आपको क्या लग रहा है? बाय रीडिंग द टर्म, बाय रीडिंग द नेम, व्हाट वुड बी द मीनिंग ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल? क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? एवरी ईयर वर्किंग कैपिटल इज कांस्टेंट. Somewhat correct, not 100%, but sir, temporary working capital is operational. The working capital itself means funds need for day-to-day business operations. So permanent ho ya temporary ho, that both are operational capital. Project and it get released after. Gautami, not 100% correct, but thoda sa correct hai. Cash inflow is fixed. A working capital is the funds that you need so that you can invest in the business. Are you following? So working capital, initially you take funding and you invest. It is an outflow. Fixed asset. A fixed asset, again, it is not a part of working capital. Fixed asset. See, working capital kya hai? For smooth running of fixed asset. Working capital is capital for smooth running of fixed asset. So fixed asset is not a part of working capital. The amount that you need for fixed asset is not working capital. उसको चलाने के लिए the additional capital that you need, that is working capital. Following खुशी, तो fixed asset cannot be funded or cannot be termed as working capital. It is somewhat additional over and above fixed asset. Okay, so some students are partially correct. Now let me explain this in a very simple practical example. Let's assume I am having a business of आइसक्रीम पार्लर. ठीक है, मेरी आइसक्रीम की शॉप है. तो कहना है से इफ आई एम इनटू डे टू डे बिजनेस ऑफ रनिंग एंड सेलिंग आइसक्रीम्स, कहना है से entire 12 months there would be some amount of working capital that I would need at all times. Yes or no? 12 महीना में कोई भी महीना उठा लो, मिनिमम उतना वर्किंग कैपिटल मुझे लगेगा ही लगेगा. मिनिमम उतना आइसक्रीम का स्टॉक मुझे रखना ही पड़ेगा. परमानेंट वर्किंग कैपिटल, that working capital that you need, permanent working capital is that working capital that you need throughout the life of the business at all times. But temporary, मान लो अब समर सीजन आया, कैन आई से आइसक्रीम का सेल्स बढ़ने वाला है, so I will keep more stock of ice cream, so I need some additional working capital over and above fixed.
Yes or no? For that temporary season, for summer season, थोड़ा additional working capital लगेगा. That is temporary working capital. Are you following, everyone? So some amount of working capital you need at all times in your business. But during some seasonal times, during some seasonal period, you would need some additional amount over and above working capital. And that is temporary working capital. मान लो मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है. सो राउंड द ईयर आई वुड बी रनिंग ज्वेलरी बिजनेस. But during Diwali season, during Dhanteras, can I say I need to keep more stock of jewelry? More stock means more investment in working capital for that Diwali season. So that additional extra capital is temporary working capital. Is this clear now? So try to keep as layman, as simple as possible. You will understand everything. FM has to be understood from layman perspective, from rational perspective. Okay? So during some seasonal times, you need to keep more stock of your goods. Okay? So for that seasonal period, you would need some extra funding, extra capital over and above permanent. Okay? So if I want to represent this in graph, so let's say this is a graph. Permanent capital is needed throughout the business exist. Okay? Throughout all the time, still the business is into existence. So there would be some amount of minimum working capital that you need throughout the life of the business. But yes, any example, jewelry, ice cream बोलो, ठीक है, फटाके बोलो, क्रैकर्स बोलो. सो फायर क्रैकर्स का सेल्स ज्यादातर दिवाली में होता है, ज्यादातर ड्यूरिंग मैरिज सीजन होता है. ठीक है. बट स्टिल क्रैकर्स का बिजनेस राउंड द ईयर दे कीप द शॉप ओपन. ठीक है. सो एनी बिजनेस. So even in CA business, if you are into traditional CA practice, then July, August, September is the season for CA. मतलब ज्यादा कमाई इसी पीरियड में होता है. ठीक है. एंड बाकी राउंड द ईयर you don't have IT return filings, you don't have audit filings. So बाकी राउंड द ईयर you need, your work is less if you are into traditional practice. So सब बिजनेस में there is season. एंड उसी सीजन में ज्यादातर पूरे साल की कमाई हो जाती है. GST रिटर्न्स राउंड द ईयर. सो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल विल लुक लाइक दिस. ठीक है. ये बट परमानेंट के नीचे नहीं जाएगा वो. परमानेंट इज नीडेड थ्रू आउट द लाइफ. अंडरस्टूड एवरीवन? सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट टेम्पररी वर्किंग कैपिटल. लेट्स से ये दिवाली सीजन आया. सो दिस इज हाउ परमानेंट वर्किंग कैपिटल वुड फ्लक्चुएट. परमानेंट बोलो, सॉरी परमानेंट नहीं, टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल. क्लियर? सो परमानेंट वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन इज, इट इज दैट वर्किंग कैपिटल विच यू रिक्वायर एट ऑल टाइम्स इन योर बिजनेस. Temporary working capital is that working capital additionally over and above permanent capital required during seasonal times when the business grows, when the business sales are generally high. Understood? So what finance scholar says, finance scholars का कहना ये है, since this is permanent form of working capital, this amount you require at all times till the business is into existence, raise these funds through long-term sources. This is what finance scholars are of the view. ठीक है. आपका व्यू अलग हो सकता है. Even you can raise this through short-term sources, but you have to check all the factors of your business. But these are general opinion of finance scholar कि permanent working capital means fixed working capital. ये business में लगने ही वाला है, इससे कम तो जाने नहीं वाला. So raise through long-term sources. Clear? But temporary working capital is needed for short period of time, maybe for 2-3 months. So raise these funds through short-term sources. But again, it depends on different business dynamics. This is not a general rule. See, FM में कोई rule नहीं पढ़ाते हम.
This is general opinion, perspective. Are you following? But this is general view of all the finance sources कि भाई 2-3 महीने के लिए चाहिए ना, तो 2-3 महीने का लोन लो, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से रेस करो. दिस परमानेंट वर्किंग कैपिटल यू नीड थ्रू आउट द लाइफ, रेस फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज. Clear? But again, this is not a standard rule, standard principle. No. See your business factor, सारे फैक्टर्स देखो. आपकी इसी लोन कैसे ऐसे ही नहीं मुंह उठा के लोन नहीं मिलती. Even financial institution will see your credit scores, will see your credibility, will see your future prospect business. ये सारे फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं. And based on that, finance is granted. But this is a general view of finance scholars. Clear? Yes, you have to go through all the factors, obviously, वरना एक factor. See, let's say I explained you in capital budgeting. Let's say there is some lucrative project, but you have to invest in that country with which our country has a war-like situation. Okay? So will you invest just because you are generating high profit? So no ना, you have to see भाई उस कंट्री के साथ हाई वॉर लाइक सिचुएशन है. जैसे ही हम एक खिल्ली ठोकेंगे, ब्लास्ट हो जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो वी कैन नॉट सेट अप फैक्ट्री ओवर देयर, वी कैन नॉट स्टार्ट अ प्रोजेक्ट ओवर देयर, हाउ मच ल्यूक्रेटिव इट मे बी. सो देखने ही पड़ते हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम फाइनेंस फैक्टर्स. फाइनेंस इज वन ऑफ द फैक्टर्स, अ वेरी क्रूशियल फैक्टर दैट नीड्स टू बी एनालाइज्ड. बट उसके अलावा भी सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं. ठीक है? सो विथ दिस वी कंप्लीट learning objective 4, 5, 6. Estimation of working capital, calculating cycle period, financing of working capital. ठीक है? 4, 5, 6 learning objective done. Now our task is to learn subtopics of this working capital. Learning sub-components, specific components of working capital. How to manage receivables efficiently, कैश को कैसे मैनेज करने का, व्हाट ऑप्टिमम कैश बैलेंस कंपनी शुड कीप एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, पेबल्स क्रेडिटर्स को कैसे मैनेज करने का, दैट वी विल लर्न नाउ. ठीक है? नाउ द स्पेसिफिक कंपोनेंट स्टार्ट्स. बट बिफोर स्टार्टिंग विद स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, देयर इज वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड डबल शिफ्ट प्रोडक्शन. ठीक है? सो नाउ योर फैक्ट्री इज वर्किंग ऑन डबल शिफ्ट. ठीक है? इस पे हम डिटेल सम नहीं करेंगे, बिकॉज इफ वी ट्राई एंड सॉल्व अ डिटेल क्वेश्चन ऑन दिस, देन बाकी सारे टॉपिक्स मिस हो जाएंगे, बिकॉज इट इज दैट लेंथी. वी विल अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है? ओके. इफ यू वांट टू डबल द प्रोडक्शन इन योर फैक्ट्री, व्हाट आर द टू ऑप्शंस अवेलेबल टू यू? कैसे डबल होगा प्रोडक्शन? I'm not saying double shift. Just listen to my question very carefully. फिलहाल you produce 2000 units in your factory. Now, due to increase in your business orders, you want to double your production. मतलब आपको 2000 से 4000 करना है. So what are the options available to you? क्या क्या options है? Increase efficiency, assuming workers are working efficiently only. Expand the whole factory. Expand the whole factory means कहने से फिलहाल जो 2000 यूनिट्स हम मशीन ए से प्रोड्यूस कर रहे थे, वही मशीन ए और एक ले लो. ये सर नो. सो अब 4000 यूनिट्स हो जाएगा. हाँ, पूजा इज राइटली कॉट कि आइदर यू बाय अ न्यू मशीन विथ सेम. ठीक है? तो भी 2000 यूनिट्स होंगे. क्लियर? ए आर्स इंक्रीज. यस. और इफ यू डोंट हैव मनी टू बाय अनदर मशीन, तो मशीन ए को ही 24 घंटे चलाओ इन डबल शिफ्ट. आर यू फॉलोइंग? सो फर्स्ट शिफ्ट 2000 यूनिट्स. ठीक है? अगेन यूज दिस सेम मशीन फॉर अनदर 12 आवर्स. ये अंडरस्टैंडिंग? सो नो नीड टू बाय न्यू मशीन अगेन. Use the same machine but for one more time on applying on double shift. ठीक है? Clear?
इंक्रीज टाइम ऑफ वर्कर्स मीन्स डबल शिफ्ट। पहले 10 वर्कर 8 घंटे के लिए काम करते थे, तो अब और नए 10 वर्कर मंगाएंगे जो 8 घंटे के लिए काम करेंगे, बट वो एक ही मशीन चलाएंगे। Understood? So these are the two options that you have if you want to double your capacity, if you want to double your production. ठीक है, बट यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? बोलो, ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं, बाइंग अ न्यू मशीन, या वर्किंग द सेम मशीन ऑन डबल शिफ्ट, ऑन ड्यूअल शिफ्ट? यस, ऑप्शन बी। आर यू फॉलोइंग एवरीवन? Okay, so now just focus on option B. We are running the same machine on double shift. ठीक है, उससे ज्यादा काम कर रहे हैं, उसको निचोड़ रहे हैं हम मशीन को। क्लियर? सो नाउ जस्ट फोकस ऑन डबल शिफ्ट। ठीक है, सी इफ यू वांट टू डबल योर प्रोडक्शन, इफ यू वांट टू डबल योर प्रोडक्शन, दिस इज ऑप्शन ए, buying new machine. This is option B, running existing machine, running existing machine but on double shift. ठीक है, these are two options available to us. ठीक है, इन दोनों केस कैन आई से इफ यू वांट टू double your production, so raw material required would get, raw material requirement would be now 2x. yes or no? 2000 यूनिट्स के लिए पहले मान लो 2000 यूनिट्स ऑफ आरएम लगते थे, तो अब 4000 यूनिट्स बनाने के लिए 4000 यूनिट्स ऑफ आरएम लगेंगे। ठीक है, ये एफ जी पहले 2000 यूनिट्स बनता था, तो कहना है से नाउ डबल प्रोडक्शन में 4000 यूनिट्स बनेगा, 2x बनेगा। yes or no? in either of the case it will be 2x. Now the twist is here. WIP. WIP stock means at any given point in time, if you check the machine, उसमें WIP जो होगा, in this case it would be 2x and in this case it would be 1x. अब how? पहले तो जिसको समझा, see this I think everyone is clear कि भाई डबल प्रोडक्शन कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल डबल लगेगा, डबल प्रोडक्शन करे तो एफजी डबल निकलेगा। दिस इज क्लियर। बट इन ऑप्शन ए, if you buy the new machine and if you check WIP at any given point in time, it would be double. But in this case, it would be single only. Why? यहाँ पे वो रिलेशनशिप में नहीं है, यहाँ पे वो सिंगल रहता है। Why? Reason? And can anyone think कि यहाँ पे 1x क्यों, यहाँ पे वो क्यों बेचारा सिंगल रह गया, वो क्यों बेचारा एक से दो नहीं हुआ? Alone it is working. See, can I say if machine A is working alone, पहले ये 2000 यूनिट्स FG कंप्लीट करेगा. So at any given point in time, if you look at the machine, WIP would be 2000 units. Yes or no? For 2000 units. फिर ये जैसे 2000 पहले लॉट का प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए, कैन आई से तब दूसरा लॉट चालू होगा. बट कैन आई से एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम इफ यू लुक एट द मशीन, WIP would be for 2000 units only. Manpower is more. I am saying number of units in WIP. That is my whole point. Stock of WIP in units. ठीक है. So at any given point in time, प्रोडक्शन प्रोसेस तो 2000 यूनिट्स का ही चलेगा ना. पहले फर्स्ट लॉट कंप्लीट होगा, फर्स्ट लॉट वुड बी कंप्लीटेड एंड देन न्यू रॉ मटेरियल वुड बी एंटर्ड इन दिस केस. बट इन ऑप्शन ए is simultaneously WIP process चल रहा होगा, simultaneously process would be working. So at any given point in time at WIP for option A, it would be 2000 units in machine A, it would be 2000 units in machine A, दूसरा वाला. ठीक है, first of all that is clear. But in option B, पहले first lot has to be completed. So at any given point in time, processing would happen for 2000 units. Once first lot is completed, another 2000 units will come. ठीक है. So at any given point in time, if you see at the machine, if you look at the machine, it would be processing 2000 units only. But here simultaneously 4000 units बन रहे होंगे.
Are you clear with this? Did you understand the logic why 1x वो सिंगल क्यों रह जाता है? ओके ओके ओके, जिसको नहीं समझा, वेरी रैशनल एग्जांपल. लेट्स से करंटली माय स्ट्रेंथ is to teach 100 students. ठीक है, my strength is to teach 100 students. ठीक है, बट एक क्लासरूम में there is a capacity of 50 students only. ठीक है, in one day I have a strength to teach 100 students, but in one classroom I can teach maximum 50 students. Yes or no? So can I say I have to take two batches? ठीक है, फर्स्ट क्लासरूम में पहले 50 स्टूडेंट आएंगे, वो पढ़ के जाएंगे, देन अनदर 50 स्टूडेंट्स विल कम. क्लियर? सो इन अ डे आई टॉट 100 स्टूडेंट्स, दैट इज क्लियर. इन अ डे माय एफजी इज 100 स्टूडेंट्स, दिस इज क्लियर. बट नाउ आई डोंट वांट टू वर्क डबल. मींस मुझे दो दो बैच नहीं करना है, मुझे एक ही बार पढ़ाना है, बट एक साथ 100 बच्चों को पढ़ाना है. दिस इज वॉट आई वॉन्ट. ठीक है, दिस इज वॉट आई वॉन्ट. सो कैन आई से क्लास बड़ा करो? नहीं, नो, द कैपेसिटी सेम. कैपेसिटी सेम. कैपेसिटी ऑफ 50 स्टूडेंट्स ओनली इन वन क्लासरूम. तो कैन आई से एक और द्वीप को पैदा करना पड़ेगा, तो साइमल्टेनियसली में और एक क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स को पढ़ा पाऊंगा. Yes or no? So I need to create one more dweep using some divine powers. Yes or no? Are you following? So एक साथ one through divine powers I've created one dweep. वो 50 स्टूडेंट को पढ़ाएगा, and the original dweep would be teaching 50 students. Are you following? So at a single point in time I am teaching 100 students. साथ साथ पढ़ा रहा हूं 100 students. Are you following? So that this is option one. At a single point in time, if you see how much number of students are studying with Dweep, so 50 students with original Dweep, 50 students with divine powered Dweep, celestial Dweep. Are you following, everyone? But in option two, I don't have any divine powers. There is only original Dweep. तो मुझे डबल काम करना पड़ेगा. ऐसा नो, पहले 50 स्टूडेंट क्लास में आएंगे, वो पढ़ के जाएंगे, दूसरे 50 स्टूडेंट आएंगे, बिकॉज नाउ आई डोंट हैव डिवाइन पावर्स, आई डोंट हैव सेलेस्टियल पावर्स, दैवी शक्ति नहीं है मेरे पास. तो कैन आई से इफ you come in the classroom at any given point in time, there would be 50 students only and not 100, because पहले 50 स्टूडेंट का लॉट आएगा, वो पढ़ के जाएंगे, फिर दूसरे 50 स्टूडेंट आएंगे. आर यू फॉलोइंग? सो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम देयर वुड बी 50 स्टूडेंट्स ओनली. Clear? This is WIP. This, in first case it is 2x, in second case it is only 1x. Are you clear with this? So that is why, see, in our case option 1 is machine A is having divine powers, but in option B it is not having any divine power. So at any given point in time there would be only 2000 units. Clear with this example? So this is the concept of double production. Key रॉ मटेरियल FG सब 2x हो जाएगा, बट WIP if you don't have divine powers it will be 1x. But if you have divine powers you can create one more द्वीप through देवी शक्ति, then you can have 2x. साथ साथ में काम चलेगा, no need to work on double shift. Understood? So आपको ध्यान में रखना है कि when double shift production is there at any given point in time, WIP units will not change, it will not get doubled. वो सिंगल का सिंगल ही रहेगा. This is the whole concept. Understood? Yeah, first case note, first case में divine power है ना, for option A is divine power. You are having new machine A as it is हमने नया खरीदा है. ऑप्शन बी में वी डोंट हैव एनी डिवाइन पावर. Clear? So double shift is like you have to do the hard work.
मशीन ए को वापस काम पे लगाना पड़ेगा। ये मशीन है, यू हैव टू वर्क वन मोर टाइम। यू हैव टू वर्क, यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी मजूरी करनी पड़ेगी। बट ऑप्शन इज सेइंग अरे यार, आई डोंट वांट टू डू दैट मजूरी, आई डोंट वांट टू डू दैट हार्ड वर्क, यू बाय न्यू मशीन एज इट इज। Yes, perfect. So once one shift is done, only then second shift will start. A 1 point A, C output. Come to the original example of teaching. ये पूरे दिन में मैंने 100 स्टूडेंट को पढ़ाया ना, 50 स्टूडेंट्स, so output is doubled ना। Even though I'm teaching at a same point in time through divine powers, output क्या निकला, 100 स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं। And if I'm not having divine powers, batch 1 50 students, batch 2 50 students. So at the end of the day, I taught 100 students in that case as well. So output double हुआ कि नहीं? So that is the whole logic. ठीक है? So with this, we cover all the concepts of learning objective number 4, 5, 6. Estimation of working capital, meaning of operating cycle, calculation of operating cycle, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल में मैंने आपको दो सिनेरियो समझा दिए। वन वेर स्पेसिफिक अजम्पशन नंबर वन होल्ड्स ट्रू, practical problem number 2 was when specific assumption number 2 does not get hold true. Yes, so ये हुआ मेहनत वाला द्वीप। पहले 8 घंटा एक बैच, दूसरे 8 घंटा दूसरा बैच, तो 16 घंटा मुझे काम करना पड़ा, बट आउटपुट डबल हुआ। बट इफ आई हैव डिवाइन पावर्स, 8 ही घंटा काम करूंगा और साथ साथ में 100 बच्चों को पढ़ाऊंगा। ठीक है? सो समथिंग लाइक टेलिंग 50 स्टूडेंट्स टू कम ऑनलाइन, डोंट कम टू द क्लास, बी ऑनलाइन। वैसे भी आप समझ सकते हो। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, rather moving to now specific components of working capital and understanding how to manage that specific components. So let's start with receivables management. That is managing your debtors, managing your customers. ठीक है? Receivables management means managing your customers, managing your debtors. तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में करना क्या है, व्हाट इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन दिस चैप्टर, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 1, इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट क्रेडिट पॉलिसीज, डिफरेंट एसीपी बोलो या क्रेडिट पीरियड बोलो या क्रेडिट पॉलिसीज बोलो, डिफरेंट क्रेडिट पॉलिसीज एंड selecting the best policy and selecting the best policy. इसका मतलब क्या कि मेरे कंपनी को 30 डेज का क्रेडिट देना चाहिए? इज दिस बेस्ट फॉर कंपनीज पर्सपेक्टिव? क्या 60 डेज का क्रेडिट देना चाहिए टू द कस्टमर्स? इज दिस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी? क्या 20 दिन का देना चाहिए? एनी रैंडम नंबर, 45 डेज का देना चाहिए? क्या 0 डेज का देना चाहिए? विच इज द बेस्ट क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट पीरियड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपनी, मीन्स कंपनी के हित में, कंपनी के प्रॉफिट एंगल से, कंपनी के नेट बेनिफिट एंगल से कौन सा क्रेडिट पीरियड इज बेस्ट? That we need to evaluate and select. Clear? So selection of the best policy would be that policy which generates highest net benefit, which generates highest net profit to the company. ठीक है? जैसे structure decisions में क्या किया था? What have you learned in capital structure decisions? Evaluation of different financing options, and you selected the best financing option of all. Which was the best financing option that maximized the wealth of shareholder?
ठीक है, एंड वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर गेट्स मैक्सिमाइज्ड व्हेन मार्केट प्राइस पर शेयर वाज हाईएस्ट. क्लियर एवरीवन? सो इसमें भी वही करना है. यू हैव टू इवेल्युएट डिफरेंट डिफरेंट क्रेडिट पॉलिसीज एंड सिलेक्ट द बेस्ट पॉलिसी. The best credit period will be that credit period which generates नेट बेनिफिट टू द कंपनी. ठीक है, जिसमें फायदा कंपनी का सबसे ज्यादा, उस पॉलिसी कंपनी विल सिलेक्ट. अंडरस्टूड व्हाट इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव? हाउ टू डू दैट वी विल लर्न, बट व्हाट टू डू इज क्लियर. क्या करना है वो क्लियर है. एवरीवन, इज दैट क्लियर? Yes, clear. Okay. So we have to evaluate, simply evaluate different policies and find the amount of maximum net benefit. Second, there is a concept called factoring. ठीक है, ये LCM HCF वाला factor नहीं है. There is some separate concept in finance called factoring. वो factoring क्या होता है वो भी इस part में, in this sub part we will learn. ठीक है. So first of all, these are the two learning objectives of this chapter. Factoring होता क्या है? Don't worry, if not in this session, next session में तो सीखने ही वाला है. But the learning objectives are two. One is evaluate different credit periods that is to be given to the debtors, to your customers, and select the best one. The best one should be selected that generates maximum net benefit to the company. क्लियर? जिसमें कंपनी का फायदा, जिसमें कंपनी का हित सबसे ज्यादा. डाइट या अच्छा सी डाइट, द बेस्ट डाइट फॉर द कंपनी. दिस इज पॉइंट नंबर वन. द बेस्ट डाइट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्रेडिट पीरियड, दैट इज पॉइंट नंबर वन. क्लियर? सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सबसे पहले तो रिसीवेबल्स मीन्स डेटर्स. टेल मी, डेटर्स का जन्म, फ्रॉम वेयर डेटर्स विल बी बॉर्न. ए फ्रॉम फाइनेंस परस्पेक्टिव, नॉट इन रियल वर्ल्ड. डेटर्स का जन्म कहां से होगा? कहना इसे क्रेडिट सेल्स होगा तो ही डेटर्स आएंगे, वरना डेटर्स यू विल नॉट सी. सो डेटर्स आर बॉर्न फ्रॉम क्रेडिट सेल्स. डेटर्स का बर्थ हैपेंस फ्रॉम क्रेडिट, ए नॉट सेल्स, क्रेडिट सेल्स. सेल्स में कैश सेल्स भी आ जाता है. ओके, तो इफ आई ट्राई टू से, इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन, क्रेडिट सेल्स क्या है ना, कुछ फायदे हैं. There are some benefits of credit sales, but साथ में there are some risk, there are some cost that comes with credit sales. ठीक है, so credit sales के अपने कुछ फायदे हैं and अपने ही कुछ नुकसान या रिस्क भी है. ठीक है, now let's understand what could be the benefit from credit sales. Yes, Achal, correct. The benefit from credit sales. See, so visualize, there is one business organization, let's say X Limited and Y Limited. X Limited is like, मैं जो भी सेल करूंगा वो सारा कैश सेल्स करूंगा, नो क्रेडिट. आई विल नॉट गिव एनी क्रेडिट. मुझसे सेल्स लेना मीन्स इफ यू वांट टू बाय गुड्स फ्रॉम मी, यू पे द कैश एंड टेक द गुड्स, अदरवाइज डोंट कम टू माय शॉप. वाई लिमिटेड इज गिविंग क्रेडिट टू इट्स कस्टमर्स. They both are into same business. हाँ, बोलो, टेल मी, ज्यादा सेल्स वाई लिमिटेड का होगा कि एक्स लिमिटेड का होगा? व्हाट डू यू थिंक? द वन विच इज गिविंग क्रेडिट और द वन विच इज नॉट गिविंग क्रेडिट, वाई लिमिटेड. सो कहना है ये फायदा हुआ ना क्रेडिट सेल्स का. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो द बेनिफिट ऑफ क्रेडिट सेल्स इज इट विल इंक्रीज योर टर्नओवर. आपका सेल्स बढ़ेगा एंड टर्नओवर बढ़ता है तो कहना है इसे इफेक्टिवली और प्रॉफिट विल इंक्रीज. Yes or no? इसके अलावा इज देयर एनी अदर फायदा क्रेडिट सेल्स का? जस्ट विजुअलाइज, देयर इज वन कंपनी नॉट गिविंग एनी क्रेडिट और गिविंग लेस क्रेडिट, देयर इज अनदर कंपनी विच इज गिविंग हायर क्रेडिट. तो फायदा किसका होगा? मीन्स सेल्स किसका ज्यादा होगा? तो ऑब्वियसली फॉर दैट कंपनी फॉर विच इज गिविंग हायर क्रेडिट. ठीक है, इसके अलावा और कोई फायदा हो सकता है क्रेडिट सेल्स का? कैन यू थिंक एंड टेल मी? चांसेस ऑफ टेकिंग इंटरेस्ट. कौन सा इंटरेस्ट? चांसेस ऑफ टेकिंग इंटरेस्ट. सी यार, सी जस्ट फोकस ऑन रिसीवेबल. सी रिसीवेबल मीन्स डेटर्स. हमारे कस्टमर कौन है? दैट वी हैव टू फोकस इन दिस कॉम्पोनेंट.
ठीक है. If we are customers of someone else, then it would be creditors for us. So that will come under payables management. वो इसमें नहीं आएगा. So just focus on our customers. हमारे कंपनी के कस्टमर्स क्या है वो फोकस करना है. हम किसी के कस्टमर है वो अभी फोकस नहीं करना है, वो पेएबल मैनेजमेंट में आएगा. सो अपार्ट फ्रॉम इंक्रीज इन सेल्स देयर इज नो एडिशनल बेनिफिट ऑफ क्रेडिट सेल्स. यही सबसे बड़ा और आखिरी फायदा है. वो आपका धंधा टर्नओवर बढ़ाएगा एंड इन टर्न इट विल इंक्रीज योर प्रॉफिट. बट विथ क्रेडिट सेल्स देयर कम्स सम रिस्क एज वेल. बोलो क्या लग रहा है, रिस्क क्या होगा? What all cost comes with credit sales? Can I say if X लिमिटेड को कोई भी कलेक्शन की टीम या एडमिनिस्ट्रेशन की टीम बिठानी नहीं पड़ेगी, हायर नहीं करनी पड़ेगी. व्हाई? बिकॉज उनका फंडा इज वेरी क्लियर. यू पे द अमाउंट, यू बाय द गुड्स. सो दे डोंट नीड एडमिनिस्ट्रेशन टीम to manage the data. Are you understanding? But in this case, can I say they need to hire, let's say, 2-3 employees who will regularly manage the debtors. They will call the debtors for collection. They will send the email for reminders so that they can make the payment. They will go to the debtors office, customer's office and bring the collection. Yes or no? So admin cost will increase if there is credit sales. Yes or no? So first cost is your admin cost comes with your credit sales. Correct? Someone, most of you has rightly said, cash sales है. तो are there any chances of bad debts? ए भाई पैसा आज ही देना है, फिर ही I will give goods. So there are no chances of any bad debts. But credit sales है, if I give, let's say credit of 6 months. इस 6 months में तो कोई भी दुनिया के कॉर्नर में होगा. I don't know. He will just run away. He might run away, or he might have incurred losses in business, so he would not pay my amount. So there are chances of bad debts as well. So if credit sales are there, then another cost is bad debts. Yes, correct. There is one more cost called discounting cost. Let's say credit sales hai, I give credit of 60 days. This is my general credit to the customers. But I am in need of money. I'm calling the customer and I'm saying, I know I have given credit of 60 days, but I need money. Can you pay within 15 days? So you will say, yes, I can make the payment, but you need to give some cash discount. Yes or no? करेक्ट. सो क्रेडिट एक कैश सेल्स में ऐसा डिस्काउंट वगैरह होता है क्या? कैश सेल्स भाई आज ही अमाउंट बोल रहा हूँ, 1 लाख का गुड्स है, 1 लाख दे और निकल. 1 लाख नहीं देना तो मत आ मेरे पास. ठीक है. सो डिस्काउंटिंग कॉस्ट कम्स व्हेन देयर आर क्रेडिट सेल्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? देयर इज वन मोर कॉस्ट, collection cost. What is collection cost? Let me give you example of financial institution. Okay. Collection cost. What bank? Will bank collect? हाँ, पैसा वसूल करना. That is correct. But will bank do वसूली from your customer on your behalf? Okay, what bank? Which bank are you talking about? Okay, on the basis of bills receivable. Okay, understood. Yes, that is collection cost. So everyone understood what is collection cost, or shall I explain with some another example? Okay, collection cost क्या होता है? Let me explain in a very layman example. Let's say there is बैंक ए. यस, एजेंट कॉस्ट इज ऑल्सो कलेक्शन कॉस्ट. हमने एक एजेंट रखा है, वसूली एजेंट, वसूली भाई, जो अपने बिहाफ पे कलेक्शन करेगा. सो दैट इज ऑल्सो कलेक्शन कॉस्ट. ठीक है. सो बैंक ए, सो लेट्स से वी आर बैंक ए. वी आर नाउ बिजनेस ऑफ बैंकिंग. वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ बैंकिंग. ये कहना है हमारा धंधा क्या होगा? व्हाट वुड बी आवर बिजनेस? टू गिव, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड गिव लोन टू द कस्टमर्स. Yes or no? We will accept deposits, we will grant loan. Correct? So let's say we grant loan to various customers and the total value is 20 lakh. ठीक है. So बैंक, हम कौन से बिजनेस में? बैंकिंग में. We granted loan, that is our sales. Loan is a sales, loan is an income. Correct?
सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंकिंग, सो इनको लोन दिया, ठीक है। नाउ व्हाट इज देयर जॉब, जिसको लोन दिया है उनका जॉब क्या है, रेगुलरली पे द इंस्टॉलमेंट्स, ये सो नो, टाइम सर इंस्टॉलमेंट भरो, टाइम पे इंस्टॉलमेंट भरो, दिस इज देयर जॉब, correct, but somehow they are cheaters, they are not paying me the due amount, they are not repaying the installments on timely basis, ठीक है। So you know what in real world happens, this is practically happening, huh? Bank, we as a bank will hire recovery agents, ठीक है। ये रिकवरी एजेंट्स का काम क्या होता है पता है, they go to their house and do the vasuli. Are you following? And literally vasuli means they coerce. Coerce समझते हो ना, coercion करते हैं. They literally say, we know at what time your son leaves for the school. We know at what time your husband comes back from office. We know everything about you. So if you don't pay, just understand what would be the consequences. Hey, you are laughing. This is really happening in this world. Recovery agents का काम ही ये है. वसूली भाई सुना है ना, वसूली भाई. So they do coercion in literal sense. ठीक है, they call the customers, and they coerce, and I don't know if you read the not, but even in many times in newspaper में भी आया कि someone has done suicide because of continuous harassment from recovery agents, ठीक है। See, if you are cheaters, if you are not paying on timely basis, obviously I have to do something, I have to take some strong action, because you are running away from my funds, or you are diverting my funds somewhere else fraudulently. So even I would take some strong steps now, because I want my funds. You have cheated on me. Are you understanding? So bank hires recovery agents. The point is, can I say recovery agents जितना recover करेंगे उतना उनको commission मिलेगा, उतना उनको fees मिलेगा. Are you following? That is collection cost. Are you understanding, everyone? This is collection cost. Collection cost is the cost incurred so that your customers pay you on time. Are you following? हाँ, हमारी एडमिन टीम ने तो बहुत कोशिश कर ली, पहले हमारी एडमिन टीम ही फॉलो अप कर रही थी, but your customers are cheaters. They ran away with your funds. They are diverting fraudulently. Okay? So now I have to take strong step, because my admin team cannot do the coercion work. Okay? So that is collection cost. So in other words, if you look at the cost, I taught you ABCD of finance. ABCD, admin, bad debts, collection, discounting. So with credit sales, what are the costs that comes ABCD? Understood? This is ABCD of receivables management. Clear, everyone? So credit sales के कुछ फायदे हैं, तो फायदे के साथ there are some नुकसान as well, there are some risk as well. And what are the risks? ABCD, admin, bad debts, collection, discounting. Clear, everyone? And apart from this, there is some additional cost called COCD, cost of carrying debtors. Cost of carrying debtors, that is COCD. So you should remember this. क्रेडिट सेल्स है तो फायदा तो है ही, बट साथ में कॉस्ट भी है. एंड व्हाट आर द कॉस्ट दैट कम्स विथ credit sales? ABCD COCD. This is how you should remember. ABCD COCD. ABCD COCD. Admin, bad debts, collection, discounting, and COCD is cost of carrying debtors. Now, what is cost of carrying debtors? We cannot learn in today's session. We will learn in our next episode of FM series. ठीक है? But first of all, did you understand कि अगर कुछ फायदे हैं तो साथ में कुछ नुकसान भी है? So can I say my net benefit is, yes, Gautami, you are correct. It is something related to opportunity cost, cost of carrying debtors. But till now, is everyone clear कि अगर credit sales के फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है? तो can I say my net benefit would be gross benefit minus the cost? Are you understanding?
सो जिस क्रेडिट पॉलिसी में your net benefit is highest, that would be the credit policy that company should select. Clear, everyone? So this is nothing but gross benefit in the form of increase in profit, less risk. Risk means ABCD, COCD. Net benefit you will get. जिस भी क्रेडिट पॉलिसी में नेट बेनिफिट इज हाईएस्ट, इट मींस उस पॉलिसी में कंपनी का सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है. वी विल गो फॉर दैट पॉलिसी. क्लियर? So to calculate net benefits, can I say the formula is gross benefits less the cost that comes with credit sales, and it will give you net benefit. Clear, everyone? So this is how you find the net benefit. But again, we are a students of professional course. Our way of presenting has professional and organized. तो कहना इसे इस चैप्टर में भी फॉर्मेट आएगा. अब इस चैप्टर में फॉर्मेट किसका होगा? टू फाइंड द नेट बेनिफिट. क्लियर? एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल में फॉर्मेट क्या था? Finding the working capital. But you know, it was nothing but CA minus CL only. But can I say our approach was very organized? Our approach was very professional. So again, even in this chapter, we will first learn the format of net benefit. Clear, everyone? FM is all about formats and formulas. FM में अगर आपको घुसना है, फॉर्मेट समझना पड़ेगा, फॉर्मूले समझनी पड़ेगी. So let's quickly understand the format of net benefit. ठीक है? Calculation of net benefit. See, I am just giving a disclaimer. My format might be different from the format that is given in the module, but final answer would be same. ठीक है? The logic, the conceptual understanding remains same, but the way of presenting might be different. Understood? So don't raise a query कि sir module में तो ऐसा format है. You have taught us this way. So I told you, दिल्ली जाने के बहुत रास्ते हैं. Ultimately you have to reach at Delhi. प्लेन में जाओ, ट्रेन में जाओ, गाड़ी में जाओ, कैसे भी जाओ, you reach at Delhi. अच्छा, वाया जयपुर जाओ, वाया उत्तर प्रदेश नोएडा जाओ, वाया रतलाम जाओ, कैसे भी जाओ. We are least concerned with that. Ultimately, you should reach at the final answer. Okay? So don't raise a query. So I'm giving a disclaimer right now. Conceptual understanding is same. What module is trying to say, even that only I'm trying to say that only, but in a different format. Okay? So presentation might be different. Okay. So gross benefit. Can I say gross benefit? So here you will see different credit periods. Let's say if company is evaluating to give 30 days credit, तो उसमें net benefit कितना, that we will calculate. Let's say 45 days credit, उसमें कितना net benefit, that we will calculate. And let's say last 90 days credit. So these are the three policies that company is evaluating. We will calculate net benefit for all these three policies and select जिसमें ज्यादा net benefit आए. ठीक है? So when I say net benefit is nothing but gross benefit less ABCD COCD. Correct? Gross benefit was nothing but increase in profit. So can I say the format is sales, our original format, less variable cost will give you contribution, less अरे यार fixed cost will give you operating profit. ठीक है? So this is operating profit. Gross benefit from credit sales is that it increases your operating profit. Clear? And इसमें से we will subtract A, B, C, D, C, O, C, D. Clear? A stands for admin. B stands for bad debts. C stands for collection. Because all this will not be included above in calculating the operating profit. ये सारे cost उसमें आए नहीं होंगे operating profit में. D stands for discounting cost. COCD is nothing but cost of cash.
ठीक है. So can I say the resultant figure is termed as net benefit for us? Yes or no? Gross benefit, you can understand, you can assume that it is nothing but your operating profit. क्रेडिट सेल्स से क्या बढ़ेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा. बट क्रेडिट सेल्स के साथ रिस्क या कुछ कॉस्ट आएंगे, एबीसीडी सीओसीडी. सो नेट यू विल गेट नेट बेनिफिट. दिस इज बिफोर टैक्सेस. इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे तो वी विल गेट नेट बेनिफिट आफ्टर टैक्स. ठीक है. एंड ये नेट बेनिफिट वी विल कैलकुलेट फॉर ऑल द पॉलिसीज दैट वी नीड टू इवेल्युएट. ठीक है. all the policies under consideration, we will calculate net benefit and we will, let's say, if 60 days is the highest, sorry, 90 days is the highest, then company should grant 90 days credit to its customer. This is selection of best policy. Clear everyone is chapter mein? Not chapter, but in receivables management, what we have to do? Are you clear? Evaluating different credit policies by calculating the net benefit amount for each of the policy. अच्छा, वो नेट बेनिफिट अमाउंट आपने सारे पॉलिसी का कैलकुलेट कर लिया. सिलेक्ट द बेस्ट वन. कैन आई से बेस्ट वन वुड बी द वन विच इज जनरेटिंग हाईएस्ट नेट बेनिफिट. क्लियर? सो दैट इज द बेस्ट पॉलिसी. मीन्स कंपनी को 90 डेज का क्रेडिट देना चाहिए. क्लियर एवरीवन? Understood the background of this chapter, the format for learning objective 1. So time is up. We need to end today's session. Again, we will meet on next session and we will take forward from here. Okay? So tech team, we can end today's session. Huh? Thank you. Thank you to all the students. Yeah, thank you.